Okay, so let's start with the group discussion, and let me give you the topic. I'll give you a topic and 2 minutes to think over that topic, and any one of you will start, then we'll have a discussion and then conclusion. So if it is possible for you, you need to be visible so that I can check how you are participating, how you are discussing with others. So let me give you the topic. Name of the topic is technology is two-edged. Technology is double edge weapon. Technology is double-edged or two-edged weapon. Okay, so please start the discussion now. Yeah, hello, good evening everyone. I am glad to start today's discussion. Our today's discussion is about the double-edged weapon. As we are and friends, in my opinion, it is a current relevant topic because as in the Independence Day, our Honorable Prime Minister said to be the mission of having a developed nation. So in my opinion, technology will be a great boost for the developed nation and currently but technology has their own advantage and disadvantage. For example, if we will take the example of the online education, so online education has their pros and cons. So these are some of the so definitely there are some of the example where we can focus. So now I am opening this house for the further discussion and invite all of you to take participate in the discussion. So let's start the discussion. Okay, can you repeat the topic once again? I joined late. Okay, technology is a double-edged weapon. It is mentioned in the chat box. It is already mentioned the name in chat box. Yes, I am totally agreeing with you, Mayank. Yes, technology has the certain disadvantages and advantages both. But if we are considering the disadvantages, it has a lots of disadvantages which are not negligible. If we are considering about only the oil sector or the non-natural resources or the fossil resources over there are certain pollution or certain harm to our nature is also there, and all not only India but also all the countries are concerned about the pollutions, and there also has a summit of the COP summit in the Glasgow about the climate change, and there are certain
they also think about how to reduce the carbon emission and things like that. So I am hoping that it will be it will be achievable in some of the future to. Yes, our future mission is also to be the free carbon emission up to the 2017. So this is also our mission, but you have said the disadvantage. Now I want to add one of the points. For example, fossil fuels that we are importing from the developed country. So we convert the fossil fuels into the petroleum products, and we export the petroleum products into the different countries. So this is some of the advantage which generate the revenue in our country. Also, Yes, Mayank, I am also try to add here in a point is that now some of the oil sectors, maybe that is the ONGC. I mean, I'm talking about only the India ONGC or All India Limited. That is a company like the explorer or production of the crude oil. They're also switching to the the natural resource, the energy resources, which are like a wind resource or the solar resources. So that might be a futuristic technologies that we are trying to grab on. yes, this is of the oil sector, but we should also focus into the other sector in which we are. Mayank and Sayan, can I interfere? Since it's a group discussion, it will be better if everybody is given first a Yes. chance, and then we can discuss upon that. You two are only discussing. So Okay. if Aniket or Akash, if you can please pitch in. And Yes, Aniket. Yes. So everyone, hello. I want to say that not only the oil sector, we should focus on some of the technologies like cell phones or mobiles that are used for productive purposes like sharing of important documents relating to study material, etc. But also they can also be detrimental to our studies by using excessive mobile games as well as WhatsApp and social media, etc. Also, some of the important rectifications that we can do is that using our technology in a manner that is only productive for us, and we can do productive work instead of detrimental. Yes, right. Right, I agree with you that totally right now that what technology- technology we are using Yes. is like mobile phones and laptops, and in this IT technology which has eased up our life. And also on the other half, if we see that most of the mass population has been provided the internet, but they are not aware that how to use this internet in a good manner. So that is the problem of this technology, that we are not told or aware about, like how can we use it in a better manner. So government can do something about that also. Okay, I agree with Bhupender, I agree with I think the main aim for technology was to make our lives easier. But anything can be a boon or bane. It can depend upon how we use it. For example, some of my friends mentioned about mobile phones and laptop, and each household today has it. But we can use it for advantages. For example, like we are having a group discussion right now, but many people who get addicted to that, it is also causing disadvantage to them, like they are having mental health issues, or they are having issues related to eyes. So I think technology is a double-edged weapon and depends upon how we use it. Yes, right. I Lender, agree, Lender. I want to add some point. Lender, जैसे कि टेक्नोलॉजी में आप एग्जांपल ले सकते हैं कि टेक्नोलॉजी डबल एज कैसे है. तो अगर टेक्नोलॉजी को हम राइट सेंस में ले तो जैसे एजुकेशन वगैरह में काफी बेनिफिट दिया है, लेकिन अगर हम उसके डिसएडवांटेज को देखें तो हेट रेट भी टेक्नोलॉजी की मदद से काफी जल्दी फैल रही है. तो अनिकेत, अगर आप बोल सकते हैं कुछ. यस. अच्छा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम जो ये टॉपिक है इसमें कई तरीकों में कई सेक्टर्स में देख सकते हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में टेक्नोलॉजी क्या है, एक बार अनिकेत, डिफेंस में, हेल्थ में, इकोनॉमी में. एक बार ब्रदर, ये ग्रुप टास्क नहीं है. हाँ, मैं ये करना चाहूंगा. भूपेंद्र भी सही बोल रहे हैं. हाँ, तो मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी के कारण मतलब कि एक देश मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी है, लेकिन इसका अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग भी होगा हमारे मतलब कि सोसाइटी पे, हमारे कंट्री पे, हमारे वर्ल्ड में. तो इसलिए टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. I am totally agreeing with Aniket here that there is certain data piracies over there in the social media over there. So this is not the correct thing for any person in our countries.
So Exactly. maybe the awareness is, and this is causes the awareness, and maybe that will be Okay. we can recover it from the Can I awarenesses. summarize just a bit? Technology, if we see today, we are talking on Zoom, so it has obviously both way added advantage. Technology has emerged as the most vital point in everybody's life. Today, sir just dropped a message and we immediately got connected. We are from different part of the country. So, not starting from COVID and post-COVID, if we see, there have been a drastic effect of technology in everybody's life. In terms of education, health, we are getting work from home, and then we are getting payment modes, UPI, everything, many things. There are numerous advantages of technology. Blockchain is coming, crypto is coming. So there are drastically, and then we are then coming to the negative part. Since we are discussing here both phases, it's a double-sided weapon. We should also discuss the disadvantage. Exactly. The payment mode which we are using, we are seeing that there has been many scams, phishing. Daily these are coming. Many new things which are coming, that medicines, on name of medicines, new some dangerous weapons are coming out. We are now from this weapons, I would like to point out that in the defense sector, where we have achieved this a lot, that we have made like US is working on soldiers which will be obviously non-human soldiers. Humanoids. We have developed drones. Not only that, other things. This defense system not we have only gone a lot in this defense. defense sector. Yes, and how we can use, how the companies can use, defense sector can use it in the negative side is that if some nation, like they are about to develop and they are developing the bioweapons, so that is a wrong way of using the technology. Right, Bhupendra. Yes, I agree, Bhupendra. As some countries are doing the same example, thing. If we are considering the atomic technology or the atom bombs itself, atomic power for a country, it also strongs a country. But if the atomic wars is gonna happen in the future, it is also might hampers to the other countries, or maybe the worldwide it is impacting. So this has also the certain disadvantages. It is maybe it is strong one country or maybe the few countries. It is also disadvantage for the worldwide, because it might looking be at the a huge perspective. impact. I agree with Silent. To take his point forward, with I would like to say that भूपेंद्र और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि technology advancement is वेपन्स को अगर हैक important. किया Technology जाए advancement तो is उसके important. बहुत बैड But इफेक्ट हो सकते I हैं think किसी भी we should कंट्री पे develop technology in such a way so that we can have a sustainable and inclusive growth. We have to consider the mankind, its future, and what will be its implication on technology. On one side, we are developing, as my friend said, that we are developing nuclear technology. Now that nuclear technology can be used to produce electricity also, and that nuclear technology can be used to produce atom bombs or nuclear bombs. Speaking of sustainable growth, if I say speaking of sustainable growth, there is a problem. There is a system called a smart car or AI-based electric vehicles, which will reduce the emissions. But we all know that smart cars and electric vehicles don't have that much of credibility nowadays, when charging stations are less and less. So in one charge, if the electric vehicle stops, but this is not a problem. I just want to add here one point. Just let me finish. Akash, I just want to add one point is that you are asking about the EV that is. Guys, I think Yes, Akash. Hello. Yes, Akash. I just want to just add one point here. Yes, EV can be reduce the uses of the crude oil or maybe the oil sector. But if you are searching in the Google, and you might know about that the lithium ion batteries are also causes a huge pollution. So that is also a disadvantage for the EV. So maybe in the future, I am agree, but nobody from this. Only lithium-ion batteries are there. There are many other batteries also which we are using in from the EVs. China, speak one by one. That is not a part. That's what I am saying, Rohit. Not only the lithium-ion batteries are used for the EVs. There are a lot of other batteries that can be used which are environment friendly. The point that I am drawing is that it is not the size of the battery. It is the point that even if we develop some of the technologies, for example, take smart cars, they are prone to be accidents, right? Because we are not accustomed to without driving cars manually. We are accustomed to driving cars manually, not automatically. And if some of the accidents happen,
it will be the ownership of the technology itself. That is one disadvantage. Can anybody else put his views? Bhupender? Yeah, please. Yeah, see, one thing I would like to say that technology has made our world more transparent. Governments, they have to provide data. Like with the help of technology, we can assure that the schemes are there. They provide us everything. Whatsoever we need, the government has to provide. Like it must not be like 100% transparency because government cannot tell you everything. But after this mobile phones and all that, we know that this is happening. So government has to be more clear with its policies. Like I want to add a point on Aniket what told about the data piracy issue going on in cyber crimes is a part of cyber crime. Well, that is one aspect of technology that we are facing since time immemorial. Maybe hacking or you know those who download games, some of them are viruses, so that is also a bad way of using technology. I think we should give chance to the Rohitas also. Yeah, Rohitas. Yes. तो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी में जैसे गेम्स वगैरह है, तो ये स्टूडेंट्स के या किसी भी मतलब वर्क के टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बेस्ड हो गए और वो पब्लिक रिलेशंस वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देते. तो टेक्नोलॉजी आने के बाद से लोगों में अपने फिजिकल एक्टिवनेस कम हुई है और कितना जुडिशियली टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है. I want to add one point with the Akash. Akash is saying about the artificial intelligence. So he only told about the advantage of the artificial intelligence, but artificial intelligence has their own disadvantage also. I also told the disadvantage, right? Manually cannot drive the cars; they're prone to accidents. And even you have seen that Facebook banned like its robots, like who developed their own language and all that, and they could do any harm to our society. We don't even understand their language. So and one of the most important thing about AIs is that recently Elon Musk is a very famous, he's a very famous man. He said that he's working on artificial intelligence because he's using that in his cars. So he said that the time will come in the world when artificial intelligence will replace everything and there will be no job left for the humans. So we'll have to kind of come out with some plans so that it gives money to all of the things. So my opinion is that we should develop technology in that sense so that both can sustain the technology and the management technology and not its master. And whatever the point that you highlighted, it's Bhupender, just let me finish. Yes, and Nilendra, whatever the point that you told just now, okay, it reminds me the Terminator movie itself, when the robots or the AI itself is thinking like, okay, the human racism is the harmful for our world. So maybe that is a certain possibility, but that is the superficious, but that is not the topic here. The topic is very critical. Yes, I can understand that is the future. My point, I agree with Sayan. My point was that we should not be too much dependent on technology. Technology sometimes is a very good slave, but it is a very bad master. Yes, we should decide how much we want to depend on technology. Totally depend on technology. I want to understand. Depend नहीं होना चाहिए. I want to understand the टेक्नोलॉजी एक समय पे खराब हो सकती है अगर ये गलत हाथों में चली जाएगी तो. I want to understand the point. हेल्थ सेक्टर में मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि हेल्थ सेक्टर में क्या होता है कि लोग अभी दवाइयां बिल्ड कर रहे हैं एंड इन दवाइयों में लाइक दे यूज दोस केमिकल्स एंड दे यूज द टेक्नोलॉजी की. अच्छा, इससे क्या ट्रिगर होता है? एंड यू हैव सीन इन द हेल्थ सेक्टर हमने बहुत सारी ऐसी दवाइयां बनाई हैं जो कि क्योर करती हैं, बट बहुत सारी ऐसी दवाइयां बनाई हैं जो कि जानबूझ के प्रोलिफरेट करती है कि आपकी बीमारी बढ़े एंड देन दे लेटर यूज दैट इन एडवांटेज टू गेन मनी. I want to add a point. I want to add one point that in medical टेक्नोलॉजी इस प्रकार से बढ़ी है कि बहुत चीजें आसान हो गई है. पहले बहुत सारी चीजों का इलाज इतना आसान नहीं था, जबकि टेक्नोलॉजी के आने के बाद वो चीजें बहुत आसान हो गई है, लोग बच रहे हैं, बहुत फास्ट हो गई है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव में जा रहा है चीजें. इवन यू सी द ग्लूकोज मीटर, लाइक डायबिटीज में जो होता है कि ग्लूकोज मीटर हो तो आप बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हो. I want to add a point related to online education provided by Mayank.
I see that online education has made advantages, like it provides education to all the people, all the students seated all over the country who couldn't pay the fees for getting to normal physical tuitions. They could just search on YouTube and get all the things available in the remote places whenever the COVID strikes or the virus. So I want to understand what disadvantages does online education Yes, give? Akash, Are you I can caring about highlight the disadvantage here in the country like competition among the India, where students? the majority of the poor people are belonging, and in the remote location where the In mobile the network remote is not location, there properly is there. not So I internet don't think that connectivity issue online will be education there. has the major contribution or maybe the right for the education to provide all of the poor people, because India has the majority in the poor, na. So that is why But I don't everybody think today has access to online YouTube and education. mobile, so you can't comment Like, upon that part because everybody is now carrying a mobile and At Akash, least everybody. No, Everybody is no, carrying a Rohit. mobile. No, If Rohit. if At least you in a are home, there is seeing one the phone at statistics out If you here, are going in the it's a in this slums, there COVID are misconception no that scenario, phones. I don't you think got to No, use no, the no, word. you are wrong. So Everyone, if you go in the slum area, at least in a family, there is one phone. There is one नहीं phone. नहीं रितेश, आई वांट टू ऐड वन पॉइंट कि अगर किसी के पास मोबाइल है और यूट्यूब या फिर कोई गूगल चलाना चाहता है, तो आई थिंक अगर कोई स्लम एरिया या फिर ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत सी इशू बड़ी नहीं है, चीज़ है। तो दिस कैन बी द डिसएडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि वहां पर जूम और अदर लिंक्स का वहां पे सपोर्ट नहीं yes, No, होता no, है. online But yes, I education am का agreeing with the कोविड के disadvantage Mayank, टाइम ये पे because ऑनलाइन उसका एजुकेशन बहुत because ज्यादा disadvantage if है। हेल्प you किया see है. the अगर statistics online in Currently two education also है, there last is 2 years internet of the COVID connectivity issue, situation, so that's why I am many asking. many poor Mayank, boys Mayank, and I would girls like Mayank, to are take Mayank, the I want to add opportunity one to point. conclude the impacted with the discussion. online Okay, and education. Let's and take the coming to opportunity to the conclude the question of discussion, phones and our phones and discussion other was things, Please I would like to conclude draw now. your attention towards Can we another conclude it? Conclude now. I would like to take the opportunity to conclude the discussion, and as we the discussion was very smooth and we discussed several areas, and we got to know that it is about the perspective. It is about, and that perspective develops its uses, and use can be good or bad. That is how like technology can be used. And in the sector of education, we discussed that online education is which is providing benefit to masses, and whereas this internet, this is the technology which provided online education, but opposite to it, we discussed that it has harms, like people get used to it, like they go wrong sides, and their mental health is affected with this. In the defense sector, we discussed that in defense sector, the technology is giving us lots of our armory, but against it, the technology could be used by if gone in wrong hands, that could be devastating. We discussed in health sector that in health sector we have developed so many machines, so many devices which have made like disease cure very fast, but on the other hand those technologies, some like medicines which are used for the gain of money by these big corporations, there also technology helps that how they will like provide some medicine and it will come back in the form of like disease cure. And then we discussed that it has also provided transparency, and how governments can government has to provide the data, because we can see now everywhere that what is happening around the world. And we discussed that in health sector, other than this sustainable development, we discussed that it must be a sustainable development, and in individual growth the technology must focus on. And the one more thing was that technology like nuclear technology, it could be used for power generation versus it could be used for war. So it is how we decided. So this is all what I conclude. Thank you. Okay. So let me tell you, this topic was technology is double-edged weapon. In these kind of cases, what you can do is you can always start with, friends, the topic given for the discussion today is very, very interesting topic. And maybe being technocrat, we all understand this topic, and we all are in position to give very good relevant points. As far as I believe, yes, I agree with the statement. It is indeed double-edged weapon, like any other technology. So it has its own advantages and disadvantages. Friends, technology leads to human development. There is no denying of that fact, and it is true.
It is the use which makes technology good or bad. Technology in itself is not good or bad. It is the use of technology which eventually is done by human being, and that eventually makes it good or bad. So now, friends, I open the house for discussion. I'm very sure you have many examples. So I think we should discuss about a couple of examples to put forth our point, and then we should also discuss how we are to cautiously use technology so that the negative effects of the technology do not lead to chaotic situation or do not go against the interest of the human being. So let's open the house, and I open the house for discussion among all of you. So this way you could have given the introduction. आप जो statement दे रखा है, you agree or disagree with the statement, और थोड़ा सा ये बताओ कि which direction do you want the discussion to go. So you told that we should discuss some examples, and then we should also think of कि जो negative aspects है technology का उसको control कैसे किया जा सकता है. इसके ऊपर discussion चलना चाहिए. ये आपका introduction होता. अब मेरे को ये लगता था कि आप you could have started with a historical thing. That friends, let's go back in the history and let's see when human beings started getting benefit from the technology. So what comes to our mind is, steam engine. When the steam engine was invented, that was a revolutionary because that led to the transformation, and that eventually steam engine was working on coal, and human beings started utilizing the chemical energy of coal and fossil fuel. Now, after all these centuries, after all these years, we have started feeling the negative impact of misuse of that technology. So we are now, world is fighting with global warming. That is a negative aspect of that. That was a gradual, actually, impact of technology. In some technology, impact is felt very fast. Nuclear technology. We have seen in Hiroshima and Nagasaki what has happened. That is a negative aspect of nuclear technology, though nuclear technology can be used in nuclear power plant, and we have got immense benefit from that also. If we talk about the space technology, the same space technology can be used to launch the communication satellites for the benefit of human, or it can be used in the missiles also. If we talk about the gun, if it is in the hand of a cop, it protects the human being. If it is in the hands of terrorists, we have seen what has happened in 26/11. So similar to that, now presently we are at the edge of new technologies. Friends, we do not know the impact of these. We talk about artificial intelligence. Today, when we talk about artificial intelligence, we talk very positive about it. All graduates wants to, get, specialist in artificial intelligence. We want to get the knowledge of blockchain technology. Today, we want to, learn about robotics. We want to know about drones. All of us know drones are being misused by the terrorists also. So friends, these are the misuse of the technologies. Now I think we should discuss about how well we can control this. And this is the control on technology is to be imposed. I give you a small example, like mobile internet is a technology. When we use that for study purpose, the way we are doing now, it is advantage. But the same mobile goes in the hand of a child, not under parental control or parental guidance, that child eventually can get addicted with the same technology. So it is the control of the parent which should be imposed. After Hiroshima, Nagasaki, the control on nuclear technology, misuse of that was prevented by world powers, including America. So there was a control, and largely humanity was saved for the last now 50-70 years from the misuse of nuclear technology. So there has to be control, whether it is from family or it is from the country. Misuse of the technology should be prevented. Friends, we all know that there is no terrorist organization which manufactures the guns. Guns are manufactured in the organized factories of the governments, whether it is American government or it is Indian government or it is some another government. Only governments manufacture the guns. How these guns reach to the terrorists then? They are not manufacturing, but still governments are manufacturing guns for maybe these terrorists. That means somewhere there's a misuse on our part, and then terrorists misuse that further to kill the human being. So we have to protect that. So this is how I think you should have discussed entire part. आपको इस direction में ले जाना चाहिए था. अब मैं बताता हूँ एक एक करके कहाँ आप लोगों की गलतियां हुई. Mayank was in haste to start the discussion. Mayank ने discussion पकड़ तो लिया, लेकिन बाद में उसको पता नहीं था करना क्या है इसका. So starting was not good, Mayank, because you started talking about the online education. Online education is not a technology. Online education is based upon the technology, that is internet.
ऑनलाइन एजुकेशन कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जो हम अभी ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं ये एक इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। तो इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है। 5G कैन बी अ टेक्नोलॉजी। 5G के प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर, एनिमल की हेल्थ के ऊपर, लेकिन ऑनलाइन अपने आप में टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके बाद आपने इसको स्टार्टिंग बहुत अच्छा नहीं किया, क्लासिफिकेशन नहीं किया, स्टेटमेंट को एग्री डिसएग्री नहीं किया। आई नॉट रेट योर इंट्रोडक्शन वेरी गुड। उसके सयान ने पकड़ लिया, उसने पॉल्यूशन पे चला गया। और आपको एक और बात बताता हूँ कि जब आपको नॉलेज होता है ना किसी चीज का, तो आप हमेशा उस नॉलेज को शो करना चाहते हो। जैसे अगर आप वोकेबलरी के वर्ड्स नए नए सीखना स्टार्ट करोगे, तो जब आप किसी से कम्युनिकेट करोगे तो उन वर्ड्स को डालना चाहोगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वही वर्ड यूज करना चाहिए जो वहां पे सूट करे। आपको वो वर्ड नहीं डाल देना चाहिए जो आपको आता है। आपको वो नॉलेज नहीं डालनी है जो आपको पता है। अब सयान ने पॉल्यूशन की बात की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात की, ग्लासगो समिट की बात की, तो वो बात आपने इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन बताना क्या चाह रहे हो? अगर आप बताना चाहते हो कि फॉसिल फ्यूल एक टेक्नोलॉजी थी, हमने उसका मिसयूज किया और अब देखो उसका हमें इम्पैक्ट मिल रहा है, तो आप बताइए वो चीज। लेकिन ग्लासगो समिट और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अगर आप रेलिवेंस बिना बताए कोई चीज बताओगे, कोई चीज ऐड करोगे, तो ऑब्जर्वर आपको उसके मार्क्स नहीं देगा। फिर उसके बाद क्या हो गया, आपने ONGC की बातें करना स्टार्ट कर दी, फिर डेविएट हो गए। फिर मयंक और सयन जो थे वो डेविएट हो गए डिस्कशन से। ये ऑयल कंपनीज की तरफ चले गए, ऑयल की बातें लपड़े करने, और इनको भूल गए कि टॉपिक क्या है, कि टेक्नोलॉजी इज डबल एज्ड वेपन। तो ये डिस्कशन किसी और डायरेक्शन, पॉल्यूशन की तरफ डिस्कशन चला गया। वहां पे किसी ना किसी को एंटर मार के बोलना चाहिए था कि आप डेविएट कर गए हो। और एक और थंब रूल बता रहा हूँ, हर GD में डेविएशन होता है। हर GD में डेविएशन होता है। आप सुनते रहो कि कब डेविएशन हुआ, और उस टाइम उस आदमी को टोक दो कि आई थिंक सयान यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, टॉपिक इज नॉट अबाउट पॉल्यूशन, टॉपिक इज अबाउट टेक्नोलॉजी। सो लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन। जब आप ये बोलोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, पक्का मिलेगा। और ये आप मेरी बात मान के रखो, आप जितने GD हैं सुन लो, सब में डेविएशन होता है। तो आप ऐसे ऐसे कोई पॉइंट्स क्यों नहीं याद कर लेते हो 4-5, जिनसे आप पक्का पास हो जाओगे। डेविएशन से रोकना है लोगों को। डेविएशन पक्का होता है, कोई ना कोई ऐसा जरूर बैठा होता है GD के अंदर जो डेविएट कर देता है टॉपिक को, तो आप उसको वापस लेके आओ, तो आपको एक नंबर मिलेगा उसमें। ऑब्जर्वर नोट कर, ऑब्जर्वर इरिटेट होता है जब डेविएशन होता है। तो मैं चाह रहा था वहां पे कि इन लोगों को रोका जाए, उनको वापस लाया जाए। अब ऑब्जर्वर वो नहीं कर सकता, लेकिन आपने वो काम ऑब्जर्वर का कर दिया, तो ऑब्जर्वर आपको थैंक्स करता है, आपको नंबर देके बोलता है भाई तूने मेरे को बचाया, इट्स गुड, तो आपको नंबर मिलते हैं। तो यू प्लीज कीप इन माइंड कि आई एम टू मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, कि मैंने कहा डेविएशन जब हुआ तो मैं पकड़ के लाऊंगा। रोहित एंटर करता है, रोहित इन दोनों को बोलता है कि भाई क्या कर रहे हो, आपस में बातें कर रहे हो। रोहित तुम्हें कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले नहीं करना। आपने कभी ऐसा नहीं बोलना कि ओके आप लोग आपस में बातें करना बंद करो, अब चलो मयंक आप बोलो, अनिकेत आप बोलो, रोहिताश। ये कोऑर्डिनेटर का रोल होता है, और आपको रोहित ये नहीं करना है। आपने अगर इनको रोकना था तो आपने बोलना ओके आई थिंक सयान एंड मयंक नाउ यू आर डिस्कसिंग अमंग योरसेल्फ, it looks like you are talking among yourself only, it's a group discussion, let me give my point, let me give, don't say let Bhupender give, let somebody else give। वो कोऑर्डिनेटर का रोल है, वो आपको नहीं करना है। और आपने बहुत बार कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले किया जो गलत है। आपको अपनी बात रखनी है। आपने भी बात रखी थी कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द लाइफ ऑफ पीपल, आपने कोविड की बात भी की, लेकिन अगेन आप पॉइंट क्लियरली नहीं बता पाए। टॉपिक कुछ और था, टॉपिक था डबल एज। तो कोई ना कोई एग्जाम्पल के साथ पूछते, कोई एग्जाम्पल देते, दैट वुड हैव बीन बेटर। आकाश ने बोला मोबाइल फोन के बारे में, सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में। सस्टेनेबल ग्रोथ कैन बी वन सॉल्यूशन, नो डाउट अबाउट दैट, कि सस्टेनेबल होना चाहिए ग्रोथ, मिसयूज नहीं होना चाहिए उसका, मिसयूज ना हो, सो दैट ह्यूमैनिटी कंप्रोमाइज ना हो। तो ठीक है, सस्टेनेबल का एग्जांपल आप दे सकते थे, दैट इज ओके। नीलेंद्र ने स्टार्ट किया हाउ डू वी यूज इट, मोबाइल फोन की बात की कि हम GD के लिए हम मोबाइल का यूज कर सकते हैं, या आप इसको मेंटल हेल्थ इश्यूज में हो सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल ठीक था, कोई उसमें ये नहीं था, ही गेव अ गुड एग्जाम्पल। रोहिताश ने एजुकेशन का बात किया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन एजुकेशन में टेक्नोलॉजी यूज होता है। भूपेंद्र ने हेल्थ, इकोनॉमी, इन सब चीजों की बात की। तो आप सब लोगों ने पॉइंट्स दिए हैं, नो डाउट अबाउट दैट। अब कुछ लोगों ने तो बिल्कुल नहीं बोला। आई थिंक वन फेलो वाज देयर, ही इज नॉट देयर नाउ, ही डिड नॉट स्पीक एट ऑल। आई थिंक ही वैनिश्ड आल्सो लेटर ऑन, बट उन्होंने कुछ भी बात नहीं किया। तो आपको बोलना तो है, और आपको जैसे कंक्लूजन का मैंने आपको पहले बोला था, कंक्लूजन सबसे आसान होता है। मैं तीसरी चौथी बार जब कंक्लूजन के लिए बोला तो भूपेंद्र ने अपॉर्चुनिटी उठा ली कंक्लूजन की। कंक्लूजन सबसे आसान होता है एंटर करना। आप कुछ ट्रिक्स अगर याद कर लें तो भाई टॉपिक कुछ भी हो, आप GD से बाहर नहीं जा सकते। ये मेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि GD में अगर आपको पास होना है तो नॉलेज नहीं चाहिए, आपको बस स्मार्ट वर्क करना है, जो मैंने आपको बताया।
इतना बोल देने, इतना समझने के लिए आपको बहुत दिमाग नहीं चाहिए कि अब डेविएट हो गए हैं हम। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि ये डेविएट हो चुके हैं अभी, या आपको किसी के पॉइंट को आगे ले जाने में कि कहाँ डिस्कशन चल रहा है, एक एग्जांपल देने में कोई ट्रबल नहीं आएगा, आप बोल सकते हैं उसको। और हमेशा जीडी में आपको जो मार्क्स मिलते हैं ना, वो कोई इनोवेटिव सोचने के बेस पे मिलते हैं। कि आज फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कहाँ ले जाएगा। तो यही इसी स्टेटमेंट को हिंदी में, अगर जैसे मैंने बोला आपको, अगर आप इस तरीके से बोल दें कि फ्रेंड्स जब जेम्स वॉट ने ये स्टीम इंजन बनाया होगा तो उसको नहीं पता कि इवेंचुअली जिस फ्यूल के ऊपर वो बन रहा है वो एक दिन वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज बन जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। उसी तरीके से आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हमें नहीं पता फ्यूचर में ये हमें कहाँ ले जाएगी, मे बी द रेस ऑफ ह्यूमन भी एक्सटिंक्शन की तरफ चला जाए। तो यस, इसका डबल एज तो होता है फ्रेंड्स। कन्विक्शन उसके साथ बात करो ना थोड़ा, आप फ्लो में बात करो वो चीज का, और अच्छे एग्जांपल्स दो तो आपको उसका वेटेज मिलता है। फॉर्मेलिटी नहीं लगना चाहिए कि बात कर रहे हो जीडी पार्टिसिपेट करना है तो बाहर लगना चाहिए, पूरा फील करके उसको पार्टिसिपेट करो। देखो, एक अच्छा एक्टर और एक अच्छा एक्टर नहीं है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। अच्छा एक्टर रोल में घुस जाता है और फिर अकॉर्डिंगली एक्टिंग करता है। अगर रोने का रोल है तो एक्चुअल में रोता है, वो तब दिखता है कि हाँ वो एक्चुअल में रो रहा है। अगर तुम फॉर्मेलिटी के लिए रोओगे तो साफ दिख जाएगा ये फॉर्मेलिटी के लिए रो रहा है। वैसे अगर तुम्हें जीडी में पार्टिसिपेट करना है, अगर तुम टॉपिक के अंदर जाके पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर डिस्कशन करोगे ना, ऑब्जर्वर को पता लग जाएगा कि ये पूरा पैशनेटली डिस्कस कर रहा है, वो आपको नंबर दे देगा। लेकिन अगर तुम डिस्कशन इसीलिए कर रहे हो कि आज हमारा डिस्कशन होना है, ये 5-6 लोग हैं और मेरा जीडी चल रहा है, IOCL HPCL का जीडी चल रहा है, मेरे को जीडी में पार्टिसिपेट करना है, फॉर्मेलिटी करनी है, तो वो नंबर नहीं देगा तुम्हें। और मैक्सिमम बच्चा फील नहीं करता, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो एक्चुअल में फील करके एंटर करके बात नहीं करता। और अगर आप बात एंटर करके करोगे तो तुम डिस्कशन भी बहुत अच्छा कर पाओगे, तुम टीच भी बहुत अच्छा कर पाओगे, तुम एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर पाओगे, लेकिन तुम्हें उस रोल में पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करना है कि भाई ये टॉपिक रहा और मैंने इस टॉपिक के बारे में कुछ सही में अच्छी बात करनी है, तुम क्या फील करते हो वो बोलो। तो तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन और तुम्हारा फीलिंग और तुम्हारे वर्ड्स मैच करने चाहिए, तभी जाके इंप्रेशन आता है, चाहे वो हिंदी में बोलो चाहे वो इंग्लिश में बोलो। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को आप में से नजर नहीं आया वो चीज कि बिल्कुल इन्वॉल्व होकर डिस्कशन कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो आप। 2-3 लाइन ही बोल दो, लेकिन अगर इन्वॉल्व होकर बोलोगे ना तो उसका इम्पैक्ट आएगा जबरदस्त, ये चीज है। तो प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। एंड जो मैंने बताया, जैसे जब भी कोई जीडी होता है, जैसे आज जीडी हुआ, अब इसको कॉपी पे, अभी जैसे खत्म होगा कॉपी निकालो, टेक्नोलॉजी इज डबल एज्ड वेपन, और देखो कि मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं वो सारे पॉइंट्स तुम्हारे पास थे, वो सारे पॉइंट्स आपके पास थे, तो सोचो कि आपने वो क्यों नहीं दिए, आपने वो पॉइंट्स क्यों नहीं रखे, आप उन पॉइंट्स को रखना स्टार्ट करो। ये सारी चीज तुम्हें ऑलरेडी पता है। और जब भी कोई डिस्कशन करते हो ना, तो वेटेज उसका मिलता है जो तुम नई चीज लेके आते हो। जैसे आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 5G की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, इन टेक्नोलॉजीज की बात करो ना आप, कि जो अभी हैं और जो आप फील कर सकते हैं, वो चीज की बात करो, तब उसका आपको वेटेज मिलेगा। तो ऑल फ्रॉम माय साइड, नो एनीथिंग यू वांट टू आस्क और टेल? सर ये पूछना था कि जैसे जीडी स्टार्ट होता है तो 2-3 लोग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन करना, तो उसमें क्या मतलब कि करते रहना है कि तब तक कोई रुके नहीं, या ये फिर देखो प्रैक्टिस से आएगा तुम्हें कि कौन जीत जाएगा कौन पीछे छूट जाएगा, ये प्रैक्टिस से आता है। पैरेलल चलना नहीं चाहिए, पैरेलल चलने के नुकसान होते हैं, लेकिन जो जितने फर्राटे से और जितने कन्विंसिंगली बोलना स्टार्ट करेगा, इसीलिए तो प्रैक्टिस करनी होती है वो 3-4 लाइंस की। Okay, good evening friends, my name is Aniket and I take the opportunity to initiate the discussion. Friends, the topic given for the discussion today is this: जो जितने फर्राटे और कॉन्फिडेंस से तुम बोलोगे, अगला आदमी वो कॉन्फिडेंस देके रुक जाता है। सर और सर अगर हम रुके ना तो लाइक वो भी सामने बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ एंड सेम लाइंस बोल रहे हैं, तो फिर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, नॉट ऐसा नहीं होता है भूपेंद्र, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, रुक जाता है कोई ना कोई, और यही तुम्हें रुकना है, ये तो तुम रुक जाओ या फिर वो रुकेगा एक लेवल के बाद। नहीं, मैंने तो क्योंकि लाइंस जो है स्टार्टिंग का जो पूरा परफॉर्मेंस तैयार किया था, लाइक आई प्रैक्टिस, तो वही बोलना है। एक्चुअल जीडी लेकिन में ऐसा नहीं होता है ना कि कोई और बोले ही ना, तो फिर वो वाली बात, एक्चुअली मतलब जीडी कोई में और रुके लोग ना। बोलते नहीं है, तुम्हें चांस मिलेगा पूरा। सर 1 पॉइंट, वो जीडी स्टार्ट करने का भी मार्क्स मिलता है, मतलब इफ आई एम टेकिंग द लीड? यस, लेकिन अगर मान लीजिए वहां पे सबको एक ही साथ ये कर रहे हैं, रन में है, तो फिर
नहीं, सब लोग नहीं दौड़ते हैं इमीडिएटली, सब लोग नहीं बोलने में स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया ना, प्रैक्टिस की बात होती है। वहां पे ऐसी सिचुएशन आती है कि बोलेगा ही कोई नहीं, ऐसी भी सिचुएशन आती है कि कोई नहीं बोल रहा है, मुंह ही नहीं खोल रहा है, क्योंकि एलिमिनेट होने का डर हर किसी को होता है। और जब उनको नहीं पता कि ठीक तरीके से कैसे बोलना है, तो हर कोई डरता है, आगे नहीं आता, फियर होता है उनको। और वो तुम प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंट हो सकते हो। मैंने बताया ना कि बोलना अपने आप में मार्क्स नहीं मिलता। अगर तुम गलत बोल रहे हो, चांस तो ले लिए तुमने, गलत बोल रहे हो, जैसे मैं को इस इनिशिएट स्टार्ट करने का मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स ना काटे अलग बात है, लेकिन मिलेगा नहीं। ऑब्जर्वर, मेरे को ऐसा फील हुआ कि मयंक स्टार्टिंग की जल्दी में तो था, उसको पता नहीं था बोलना क्या है, तो नंबर नहीं मिलता उसका। इसलिए ये हाँ, अगर बीच में डिस्कशन कर रहे हैं और 3-4 लोग एक ही साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो कैन वी इंटरप्ट? यस, यू कैन इंटरप्ट विद योर वर्ड्स एंड यू कैन कंट्रीब्यूट, बट उनको ऐसे ना लगे कि आप उनको डिसिप्लिन कर रहे हो, वो नहीं करना। क्योंकि कई बार ऑब्जर्वर यही चेक कर रहा होता है कि ये लड़ते कैसे हैं, उनको ऐसा मैनेजर चाहिए होता है जो लड़े। ऑब्जर्वर यही देखना चाहता होगा कि मेरे को आज एक ऐसा बंदा रिक्रूट करना जो किसी को बोलने ना दे, अपना पॉइंट चाहे रखे चाहे ना रखे, लेकिन किसी को बोलने ना दे। अगर मैं वो रिक्रूट करने बैठा हूँ और तुमने उसको बोलने नहीं दिया, तो तुमने मेरा ऑब्जर्वर का काम गलत खराब कर दिया। तुमने ऑब्जर्वर का काम नहीं करना, कोऑर्डिनेटर का काम नहीं करना। तुम अगर वो लड़ रहे हैं तो उनको चुप करो और खुद बोलो, वो करो। फ्रेंड्स गिव मी चांस, फ्रेंड्स यू आर, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सी नोबडी इज गिविंग मी चांस, व्हाट इज अनफेयर, व्हाट इज नॉनसेंस गोइंग ऑन, दिस इज अ डेमोक्रेसी, यू शुड गिव चांस टू मी। ऐसा नहीं बोल सकते ना तुम लोग वहां पे। तुम ये बाई चांस किसी को नहीं बोल सकते, वो तुम्हारे नंबर कटते हैं उसमें। ये लॉ, ये रूल के अगेंस्ट है जीडी के, कि तुम किसी को बोलो कि व्हाट आर यू, सी यू आर नॉट लेटिंग एनीबॉडी स्पीक। अगर आदमी बोल दे कि यस दैट इज व्हाट जीडी इज, आई विल नॉट लेट यू स्पीक, अगर वो ऐसा बोल दे फिर, तो एक्चुअली नोबडी इज केयरिंग अबाउट यू इन द जीडी। हाँ, ग्रुप टास्क में जरूर ऐसा होता है कि ये लड़ाई थोड़ी करनी है यार। ग्रुप टास्क में तुम एक्सक्यूज मी सॉरी सब चलता है, जीडी में नहीं चलता एक्सक्यूज मी सॉरी। जीडी में तो चलता है मारो काटो आगे निकलो। जैसे कि मैं कोई भी मतलब बीच में कुछ चल रहा है, तो मतलब उसको वो उसका और मेरा पैरेलली चल रहा है, तो मैंने जैसे मैं जनरल यूज करता हूँ कि काइंडली लेट मी फिनिश मेट, ऐसे करके, तो ये ठीक रहता है या? एक आधी बार बोल सकते हो, बार बार नहीं। बार बार हक को नहीं बोल सकते, लेट मी स्पीक नहीं बोल सकते बार बार। अच्छा, ओके। यू नीड टू क्रिएट योर स्पेस। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे रोहित जो है थोड़ा कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो ऐसे में जैसे शांति से रहती है, तो कैसे हैंडल करें? ऐसा लाइक सबको ऐसा लग रहा था कि हाँ अब इसको बोलने दो, तो उस टाइम लाइक उसको टैकल कैसे करें? देखो यार, प्रैक्टिस से आता है और सफिशिएंट टाइम मिलता है आपको बोलने का। नहीं बोलने का टाइम मिलता है। अब जैसे वो मतलब सब चुप हो रखे हैं एंड ही वाज सेइंग कि हाँ ये करो वो करो, तो एंड आई न्यू कि ये वाली बात मतलब काम की नहीं है, तो हाउ शुड आई से कि हाँ भैया ये नहीं करना। एंड नहीं, आप बोलो, आपको बोलने का टाइम तो मिल ही रहा है ना। भूपेंद्र उसके नंबर कटेंगे ना, रोहित के। ओके हाँ, मतलब अलग रोहित के नंबर ऑब्जर्व काटेगा अगर उसको गलत लगेगा। आप अपना काम करो, आप अपना बोलो। देखो, बोर्ड रूम में कोई आदमी ढंग से बात नहीं कर रहा, लेकिन आप बात कर रहे हो, तो आपको नंबर मिलेंगे ना उसके। बोर्ड रूम में तुम किसी को चुप नहीं करवा सकते। तुम एक्चुअल में सिचुएशन समझने की ट्राई करो कि डेलीगेट है, वो डेलीगेट में कुछ लोग ऐसे हैं जो ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, तो तुम उनको कुछ नहीं बोलोगे, तुम अपनी बात रखोगे। ओके सर एक और डिसिप्लिन नहीं करते हो ना वहां पे। सर जस्ट वन थिंग, कंक्लूजन की बात आती है तो आई हैव रेड समवेयर एंड आई हैव हर्ड इवन कि you don't need to conclude on either or positive or negative. You have to give a neutral answer kind of thing. You need to give the points of everyone actually. Okay. And some people will give positive, some people will give another point. So you need to conclude on behalf of the entire group. And if some people in the group feel this way, some people feel that way, you have to tell the view of everyone. Automatically it becomes neutral. Women are good driver or not? Some will say yes, they are good drivers. Some will say they are pathetic driver. I have seen women always parking very badly, so they are pathetic drivers. I know. And somebody will say no, they are very good. It is not sex-driven phenomena. तो आप जब conclude करोगे तो आप क्या बोलोगे? कि some of the members, yes, they felt that women are very good drivers. Some felt no, they are not good driver. So all had their own opinion. तो neutral तो automatically हो गया जब आपने पूरे group का कर दिया। सर एक डाउट था, जैसे डिस्कशन में
इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बीच में जो डिस्कशन पार्ट होता है, तो सर 3-4 मेंबर एक साथ एंटर कर जाएं, तो सर हमें अपना पॉइंट रखने के लिए उनके साथ ही बोलना है या फिर उनके रुकने का वेट करना है? देखो, जैसे आपने आज पार्टिसिपेट किया तो आप में से ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला। जी सर। हर किसी को मौका मिलता है और ऑब्जर्वर ये देखता है कि हर कोई बोल सकता है। ये आप जरूर फील करते हो कि मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन हर कोई बोल सकता है। अब मानो इस बात को, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। Yes, sir. हर किसी को चांस मिलता है। जब चांस मिले तो ढंग की बात बोल दो, ये मैं बोल रहा हूँ। Okay, sir. चांस मिले तो काम की बात बोलो। आप तो काम की बात बोल ही नहीं रहे हो ना। आप सब लोग अब सोचो जरा ध्यान से कि जो आप बोल सकते थे कहाँ बोला आप लोगों ने। आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे सकते थे, लेकिन आप डेविएट कर रहे हो। यहीं पे तो कम्युनिकेशन स्किल आती है कि काम की बात बोलनी है, प्रिसाइजली, वेस्ट नहीं करना टाइम, टू द पॉइंट बात बोलो। एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा जो कम्युनिकेशन स्किल वाला है, वो क्या करता है? वो इधर उधर की बात नहीं बोलता, स्ट्रेट बात बोलता है, सीधी बात। इधर से उधर नहीं चला जाता है। वो स्ट्रेट बात बोलता है जिसके लिए उसको बोलना है, और वो टू द पॉइंट बात बोलता है, एग्जाम्पल देता है, एक्सप्लेन कर देता है, सारे लोगों को समझा देता है बात। वही करो ना आप लोग। कई बार तो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, देखो कहाँ चले गए, ओएनजीसी में चले गए आप। सयान और मयंक ने ऑयल सेक्टर डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो आप बहुत ज्यादा अलग अलग डायरेक्शन में चले गए ना। कई बार आपके दिमाग में कोई चीज होती है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो उसका मीनिंग नहीं जाता। कोई भी नहीं, कोई मीनिंग उसका नहीं जाता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इससे क्या मीनिंग समझ रहे हो? तो आपको एक्सप्लेन करो ना कि देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी का जब मिस यूज होने लगता है तो वो सस्टेनेबल नहीं रहता। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनका इम्पैक्ट ना हो, इसके लिए हमें साथ साथ, जैसे जो हम फॉसिल फ्यूल निकाल रहे हैं तो हमें सिंक भी क्रिएट करना है, ट्रीज भी प्लांट करना है, तो सस्टेनेबल हो जाएगा डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का यूज हो जाएगा, मिस यूज नहीं होगा। तो इट शुड बी सस्टेनेबल। तो एक्सप्लेन करो ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। वर्ड बोलने से थोड़ी मीनिंग पता चल जाएगा सबको, और ऑब्जर्वर हमको पता लग जाएगा, हाँ ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है। बड़े ध्यान से आपकी बातें सुनते हैं वो लोग। ऐसे नहीं कि सब आप इग्नोर हो जाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। अच्छा सर, तो जैसे मतलब मैं एक पॉइंट रखा, उसके बाद बहुत टाइम बाद और एक पॉइंट रखा, तो ऐसे गैपिंग का भी कोई वेटेज रहता है क्या जीडी में? नहीं, गैपिंग का कोई इशू नहीं होता। देयर इज नो इशू इन गैपिंग। आपको बस 2-3 बार एंटर करना है, दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। 2-3 बार आप एंटर कर जाओगे तो कोई इशू नहीं आएगा उसमें। एंड गिव योर पॉइंट। या विकास, व्हाट डू यू वांट? यस सर। विकास, हाँ विकास, अब 10:15 बजे आइए, 10:15 पे, राइट? ज्वाइन करो। ओके राइट। तो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। इसको सीखो आप थोड़ा। सारे का सारा जीडी का जो तरीका है ना, उसको सीखो और पैशनेटली पार्टिसिपेट करो। मतलब दिल से पार्टिसिपेट करो। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा लगे कि नहीं काम की बात बोल ली आपने। टॉपिक को फील करो पहले, टॉपिक दिया क्या है। चाहे 2-3 मिनट सोच के ये सोचो कि यार बोलना क्या है, टॉपिक क्या दे रखा है। अगर आप टॉपिक के रेलिवेंट टॉपिक के बारे में बात करोगे, 90% स्टूडेंट्स टॉपिक से दूर होकर बात कर रहा होता है, टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा होता, सीधी बात नहीं करता। 90% बता रहा हूँ तुम्हें। हजारों जीडी कर लिए मैंने स्टूडेंट्स के साथ, और उसके बेस पे तुम्हें बता रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो जीडी उस वहां डोमेन में कर रहा होता है जो एक्चुअली दूर हो गया, टॉपिक से दूर हो गया, काम की बात नहीं कर रहा है। बाद में तुम्हें काम की बातें याद आ जाएंगी सारी। अच्छा, ये तो मैं बोल सकता था यार, तो मैंने बोला ही नहीं। और ये भी एक प्रैक्टिस से आता है। ये सारी चीज प्रैक्टिस से आती है, ये नॉलेज से नहीं आता, प्रैक्टिस से आता है। नॉलेज, लोग बच्चे सोचते हैं नॉलेज होना चाहिए मेरे को। नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिस है सारी। टॉपिक बड़े सिंपल से मिलेंगे तुम्हें, ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर हर कोई बोल सकता है, ऐसे मिलेंगे। लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऐसा हो जाए तो मेरे को ये बोलना है, ऐसा हो जाए तो मेरे को ये बोलना है। वो एक बार प्रैक्टिस से भी आता है। सुनो भी, जितने भी जीडी पढ़े हुए हैं उनको सुनो भी। अच्छा, ये टॉपिक था, जीडी के बारे में सुनो, फिर सोचो तुम क्या बोलोगे, फिर एंड में जाओ, ये देखो मैंने क्या बोला था। फिर तुम्हें पता लग जाएगा, अच्छा यार ये मैंने क्यों नहीं बोला, ये तो मैं भी बोल सकता था, ये इंट्रोडक्शन में भी दे सकता था, मेरे को दिमाग में क्यों नहीं आया टॉपिक। फिर तुम वो लिखते चले जाओ कॉपी पे, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे कॉपी भरती जाएगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारे आइडियाज पॉपअप करना स्टार्ट कर देंगे, तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे होता है। तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, नॉट नॉलेज। नॉलेज जितना कर चाहिए, आई नो यू हैव दैट नॉलेज। आज ऐसा कोई चीज हमने नहीं डिस्कस किया जो हमें नहीं पता था। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हिरोशिमा नागासाकी हमें पता है यार, 5G का नाम हमें पता है, ड्रोन्स का नाम हमें पता है,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम हमें पता है, रोबोटिक्स का नाम हमें पता है, हमें ये भी पता है कि जो गन है वो एक पुलिस वाले के हाथ में भी होती है, एक टेररिस्ट के हाथ में भी होती है, वो भी हमें पता है। तो कन्विंसिंग एग्जांपल दो ना यार, उस तरीके से बोलो, कोई नॉलेज बेस नहीं है। और हम जो तैयारी करते हैं वो इसी बेस पे करते हैं कि साहब अगर मेरे को टॉपिक ना पता हो तो कैसे मेरे को आगे प्रोसीड करना है, तो ऐसे तैयारी करो अपनी और जीडी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, राइट। चलो देन आई टेक लीव ऑफ यू नाउ and keep participating in the GD and revise whatever is given on the panel. Thank you.